attrition. Chairing the G20, India can help all of us focus on the smartest solutions. Scholarly in scope and impassioned in tone, our next guest, Asaduddin Owaisi's speeches make headlines, be it in Parliament or at a rally. Mr. Owaisi's views may trigger disagreements or agreements, but it is definitely impossible to ignore him. He's a proud Indian, and this image of him hoisting the flag at the Consulate General of India in Chicago encapsulates that. As a key voice of the opposition and leader of a party that has well gone beyond regional realms of Telangana, Mr. Owaisi's idea of India is of key significance in any conversation about transformation. Ladies and gentlemen, Mr. Asaduddin Owaisi, four-time Member of Parliament, AIMIM President and Barrister at Law. Mr. Asaduddin Owaisi, we're happy to have you here for a conversation with Republic Bharat's senior anchor and senior editor, Sucharita Kukreti, and Republic TV's executive editor, News, Niranjan Narayan-Swamy. Welcome, sir, and it's over to you, Sucharita and Niranjan. You're our focus, sir. Can you take the... They want you right in the middle. You know, Mr. Owaisi, in the last 6 years, this is our third Republic Summit. And, you know, we've conquered COVID. We have conquered our conspirators. And it appears that on the third edition of the Republic Summit, you have conquered your trepidation to be on the stage at the Republic Summit. So first of all, thank you very much. He's taken the flight from Hyderabad early this morning to be with us. So we are very, very humbled to have you with us at the Republic Summit stage. Mr. Owaisi, pre-independence, post-independence, your party has been around, your party has been expanding. You continue to expand. So let me start by asking you, how have you transformed as a party, and why do people still perceive you as a minority party leader after all these decades, almost 100 years of existence? The party has been formed 65 years ago. I have never called myself, and neither do I have any ambitions to be called as a Muslim leader. The expansion part, yes, it's natural. You know, every political party would want to expand their footprint, and I was lucky enough that when I was given this huge responsibility of heading my party, the party was already very strong on the ground, the organization was very strong, so I had this great platform, expanding it outside the then Andhra Pradesh. And this expansion started, say, 2011, 2010 onwards. So, yes, the journey continues, but there is nothing wrong in it. I think so every political party would want to increase their sphere of influence. And at the end of the day, it is the democracy which gets strengthened. It is people's confidence in democracy increases. It is, you have the youth who will come out and vote, and we might not win elections, but the biggest victory is that we are bringing people to the polling booth, we are getting votes. That is a great service to the nation itself, because democracy has to be strengthened, radicalization has to be controlled. So this is what we are trying to do. ओवैसी साहब, आपकी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है। 3 राज्यों में आपकी पार्टी के विधायक हैं, सांसद भी हैं, आप खुद सांसद हैं। ये बताइए, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को एक माइनॉरिटी लीडर के रूप में देखते हैं या अपने आप को एक नेशनल लीडर के रूप में देखते हैं? नहीं, ये मैं बड़ी पूरी इखलास और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं ना तो कोई माइनॉरिटी का लीडर हूँ, ना कोई नेशनल लीडर हूँ।
मेरा काम मेरी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है और हमारी कोशिश यही है कि सबको साथ ले लें। हमारे जितने पार्टी के जिम्मेदार हैं उनकी मेहनत से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर मुझे इस खाने में डालकर बांट देना कि मैं माइनॉरिटी का लीडर हूँ या नेशनल लीडर हूँ, तो ये गलत होगा। और जो लोग हैं उनको मुबारक, बट मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद ये कि काम करूँ, पार्टी को आगे लेके जाऊँ, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं हमारी पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और मुझे इलेक्शन लड़ने का एक जुनून है। वो तो पता चल रहा है। हाँ, इलेक्शन लड़ने का जुनून है, वो पता चल रहा है, क्योंकि इस वक्त ओवैसी साहब की पार्टी 8 राज्यों में अपनी सियासी जो पकड़ है वो बनाने की तरफ है, क्योंकि आपके विधायक और सांसद हैं। लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था ओवैसी साहब, क्योंकि आप खुद जब सभाओं में जाते हैं, आप कहते हैं, आप अपने वोटर्स से कहते हैं कि ब्राह्मणों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, राजपूतों के नेता हैं, आपके नेता नहीं हैं। तो आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को केटर नहीं करते हैं क्या? तो मेरा मकसद ये है कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, एक सच्चाई है कि हर समुदाय का, हर कास्ट का, हर बरादरी का एक नेता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, रूलिंग पार्टी हो या पोजीशन हो या दूसरी रीजनल पार्टीज हो। मगर इसमें अगर आप देखेंगे तो नेता अगर किसी का नहीं है तो 14% माइनॉरिटीज़ का कोई नेता नहीं है और दलितों का भी कोई नेता नहीं है। और ये डेलिबरेटली एक साजिश के तहत ये कोशिश की गई है कि इनका कोई नेता ना हो। और इससे आप देखते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, एम्पावरमेंट का जो तरीक़ा है, वो नहीं हो पाता है। तो आप देख लीजिए कि जितने पार्लियामेंट में अगर जिस किसी के सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, उनके पास अगर कोई मुस्लिम एमपी है, कितने मर्तबा वो इन इश्यूज़ पर बात करते हैं। जबकि हमारी जब स्पीच होती है पार्लियामेंट में तो सब आकर बैठते हैं, मैं बोलता आप बोलो ना, तो बोलते नहीं नहीं तुमको सुनने बैठे हैं। मतलब क्यों नहीं बोलते? नहीं, पार्टी हमारी नहीं बोलने देगी हमको। तो ये जो सेकुलरिज्म है ना, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को मैं कभी नहीं मानूंगा। संविधान का जो सेकुलरिज्म है मैं इसकी इज्जत करूंगा, उस पर जान भी कुर्बान करने करूंगा। मगर ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करके और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी की तरफ से जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, बोले नहीं इसमें सब आ गए, सब कहाँ आते हैं? इसमें तो आप हर समुदाय को आप दे रहे हैं, आप लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर बिहार में अगर कोई नीतीश कुमार अगर किसी एक कन्विक्टेड मर्डरर को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? वो बड़े समुदाय के हैं, उनको इलेक्शन जीतना है। अगर बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ा जाए तो क्यों छोड़े? भाई वहाँ पे वो है। तो यही हम कह रहे हैं कि जिससे भारत के लिए हमारी पॉलिटिकल। पर फिर ओवैसी साहब, एमआईएम, एआईएमआईएम नेशनल पार्टी कैसे बनेगी? मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप एक राजनेता हैं, आप अपनी पार्टी का एक बड़ा लैंडस्केप देखते हैं, आप उसे एक नेशनल पार्टी के रूप में देखते हैं। अगर पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी तो नेता को भी मुसलमानों वाली राजनीति से ऊपर आना पड़ेगा, जो सभाओं में आप कहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि हम लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप मुझे लीडर मत बनाइए, आप बनिए, और वो होगा, आज नहीं तो कल होगा। अभी लगता है कि ऐसा होगा, नहीं होगा, मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी में होगा। और उसमें ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ बल्कि दलित लोग भी आ रहे हैं बड़ी तादाद में। अब औरंगाबाद की मिसाल ले लीजिए, हमारे पास 27 कॉरपोरेटर थे, सबसे ज़्यादा दलित कॉरपोरेटर हमारे पास थे। हैदराबाद में आज देख लीजिए, हमारे पास नॉन मुस्लिम कॉरपोरेटर्स हैं। तो ये काम चल रहा है। मगर अगर जो सबसे कमज़ोर है उसको अगर आप उठाने की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई, मैंने समझता कि कोई गलत बात है उसमें। Yeah, you know, all these years, Mr. Owaisi, one thing that you have to give it to Mr. Owaisi, he calls out what he just used, that phrase called political secularism. I have a tweet of yours where you tweeted, and you said, if Sharad, I'm reading out his tweet, he said, if Sharad, referring to a leader's first name, he said if Sharad was Shadab, he'd be called B-team and be an untouchable for seculars. I've never supported BJP government and never will, but this is the second time NCP supported BJP, and it may not be the last Sahibs supporting those who jailed his minister Nawab Malik. This is the value of Muslims. Now, the reason why I quoted this is because you speak out against these parties, these political parties who call themselves secular. You're very vocal about them. You spoke about Nitish Kumar. You also spoke about, or rather, you speak about the Congress party. What have they done so wrong? And I'll get to the data part later. What have they done so wrong that you claim that
the minority community has been cheated. Let us start with Sharad Pawar Sahib. Let us start with him. Okay, let's start. Now, who had this 6 a.m. oath-taking ceremony? It could happen again. And you know the inside details better than me. I don't know. Anything can happen, you know. So I don't rule out that possibility. Then the NCP supports BJP in Northeast. You see, Yes. you're supporting them. Yes. Take the example of Nish Kumar. I remember a discussion which took place in Arnab's earlier avatar, wherein... He's the same. No, in a different color he was there, in a different place. And that program happened to be on Bihar, when Nitish Kumar had taken the support of BJP, and then, so I had stated that in that program, it's available on YouTube, Nitish Kumar became Chief Minister Health of BJP. He stood up in the assembly and said, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, BJP के साथ नहीं जाएंगे, फिर BJP के साथ चले गए, फिर छोड़ दिए. Now you see, this is very convenient political secularism. You know, you stood up in 2019 and said, make Modi the Prime Minister. And only one seat was won by the Congress party in Bihar. Yeah. So this is what it is. So, and then you have Congress party who loses every election with BJP. And then, you know, when I contest elections, my party contests election, they have the cheek to say, oh, you are there to divide this vote, that vote. Well, the Prince Charming lost in Amethi not because of me. Prince who? Well, Prince who? You know, whatever prince he's of. He lost in Amethi not because of me. You know, I was not there. I wanted to be there. You know, next time I'll be there. At least I take the credit of ensuring that my contribution was there. Now, you know, so you win Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, 65 Lok Sabha seats. Within 4 months, you win only, what, 3 Lok Sabha seats? I was not there. So that is why, आपका जो सवाल था ना, आप देख लीजिए, जब यहाँ पर हारते हैं इन लोगों से, तो इल्जाम आप नहीं लगाते अपने आप पर कि भाई आपकी नाकामी की वजह यह है कि आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी और मोदी से. पर आप तो सारे राजनीतिक दलों के फेवरेट हैं. आपके जो साथी हैं या आपके जो समर्थक हैं वो आपको रॉकस्टार मानते हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं हर कोई आपके लिए एक बी टैग वाला तमगा लेकर आता है. नहीं, मेरे को कोई फर्क वो नहीं. आप पर बोलते जरूर हैं, हर कोई बोलता है. तेजस्वी यादव ने बोला, नीतीश कुमार ने बोला आपको बी टीम. मुझे आपको कांग्रेस बी टीम बोलती है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बोलना चाहे बोले, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. आप हेडलाइंस बटोरते हैं उससे. आप हेडलाइंस बटोर रहे हैं उससे. नहीं, देखिए, अगर आप जब अच्छा काम करते हैं ना तो इल्जामात तो लगते हैं. आप जितने भी राजनेता इस देश में गुजरे हैं तो उनको, जो उर्दू में कहते हैं कि उनको इस इल्जामात के खाक और खून से गुजरना पड़ता है, तो हम भी गुजर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इल्जाम लगेंगे मगर लोग जानेंगे, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है. But I have to tell you one thing, Mr. Owaisi, and I've, you know, we've met Mr. Owaisi twice. In the previous editions of the summit, we went to invite him, we went to meet him at different occasions. We had the opportunity to actually see how Mr. Owaisi works. So, whenever he's in Hyderabad, there is never a day when Owaisi is not at his office. He's always at his office, Dar es Salaam, and you have hundreds of people just waiting to get an audience, and they come to him with every small issue that they have. And each of them get an audience, and each of them ensure at some stage their problems are solved. So that way, the local connect, I have to give it to you, I've seen that, and that's why do you think Prince Charming has been able to so crack that code? Yeah, we are beggars, we are paupers, we are untouchables, and then you have these entitlement driven political leaders who believe that they are a gift to this nation and they should be winning elections and ruling over our dead bodies. So we will not allow that. Yes, we work. You know, I am accessible. The biggest reason which God Almighty has ensured that I win every election is that we are accessible. You know, during COVID, I have data, we had helped more than 3,000 patients in both the waves.
both the ways. I have names and numbers of them, so that is the confidence. That is how you build confidence. That is how people come out and vote for you. Yeah. And that is very important. So yes, you have to work hard. There is no other way. I have learned my life through hard work. I'm not extremely intelligent as you guys and your boss are. But the only thing I have is I work hard. I work hard. And sometimes I have done mistakes by working in a wrong way. But as far as my sincerity and my hard work is concerned, that is what I have. I have to do it. There's no other way, Yeah, no shortcuts. ओवैसी साहब, आप मेहनत करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हम भी आपको उतनी ही मोहब्बत देते हैं, इसमें भी आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए. आप मीडिया के फेवरेट पोस्टर बॉय हैं, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? और ओवैसी साहब, नहीं, आपकी मोहब्बत, आपकी इतनी बेहतरीन मोहब्बत है कि दुश्मन की जरूरत ही नहीं है. अब देखिए, ये इल्जाम है, इसे हम खारिज करते हैं. ये इल्जाम है. अब आप 6 बजे, 7 बजे और फिर 9 बजे जो मुल्ला जी बैठते हैं आपके पास, तो फिर उसमें मोहब्बत दिख कर आती है ना. देखिए, ये इल्जाम है, इसे हम खारिज करते हैं, और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिपब्लिक नेटवर्क से जुड़ना भी पड़ेगा. और मैं ये इसलिए कह रही हूं, मैं जब कभी निरंजन मुझे बोलते हैं, निरंजन को तो कभी शिकायत का मौका नहीं दिया. पूछ लीजिए आप. हमें तो दिया है आपने. नहीं, आपसे भी आपने कहा तो हम आगे. हम किसी शिकायत की बात नहीं कर रहे. आज हम ओवैसी साहब के साथ, क्योंकि माय आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम तर्कों पर बात इसलिए कर रहे हैं कि हम तर्क में साथ चल सकें. और इसीलिए ओवैसी साहब, आज आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपको पसंद कौन है? आप आज प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पर सवाल करते हैं, आप जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी सवालों के घेरे में खड़े करते हैं. तो ओवैसी साहब को पसंद कौन सा राजनीतिक दल है, या कोई ऐसी पार्टी है जिसके साथ ओवैसी साहब साथ चल सकते हैं? देखिए, आप बड़ा पर्सनल सवाल कर रहे हैं. ये पर्सनल और मुझे घर वापस जाना है, तो मुझे अपनी बीवी पसंद थी, इसलिए मैंने शादी की. तो पसंद उस हद तक रुक जाती है, उसके बाद कोई पसंद नहीं रहती है. और मुझे जुनून है अपनी पार्टी के लिए काम करने का, और मेरा मकसद एक ही है कि मैं जब तक मुझे अल्लाह जिंदा रखे मैं काम करूंगा. अब ये पसंद नापसंद का सवाल नहीं है. देखिए, अब पसंद जो होती ना, वो इश्क और मोहब्बत की बुनियाद पर पसंद होती है कि जिंदगी भर मुझे इनके साथ गुजारना है. ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है. तो इसमें आप ये जो कॉलेज के जमाने में भाई हम मोहब्बत करते थे, वैसे साहब, पसंद का क्या है? राजनीति बदलने की अगर आप बात करते हैं, नहीं, तो पसंद का नहीं. आप AIMIM की तो सरकार नहीं अभी बन सकती हाल फिलहाल में, तो बिल्कुल सही है. बिल्कुल. तो किसके साथ आपको लगता है? देखिए, पसंद अगर आप बोलेंगे कौन सा नेता पसंद है, तो मुझे कोई जरूरी नहीं कि मैं किसी को पसंद करूं. मैं क्यों जरूरी नहीं पसंद करूं? भाई वो होंगे, भाई बड़ा पर्सनल चीज है. हाँ, अगर आप बोलेंगे कि भाई भारत की राजनीति में किसने बड़ा योगदान दिया या जमहूरियत को खड़ा किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं. तो फिर वो राजनीति कैसे बदलेगी? नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं. इन लोगों की कुर्बानी को कोई छीन नहीं सकता. तुम यकीनन ये इनको मैं बड़ी इज्जत की निगाहों से देखता हूं. मगर आप मौजूदा दौर में बोलेंगे, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे मालूम, मोहब्बत. No, I'll tell you. I had the opportunity of meeting Mr. Owaisi during the Uttar Pradesh campaign, the recent elections, when we had a chat with him, I think. He told me something off record, and I will not say it because it was completely off record, but he did mention one thing, and my question is linked to that, Mr. Owaisi. In the 2022 polls, the Lok Sabha by-polls in UP, in both, I'm taking a case study, in both Azamgarh and Rampur, the BJP won both the seats, okay? Rampur has over 50% Muslim population. Azamgarh has 36% Muslim population. So this notion that Muslims don't vote for the ruling party is somewhere changing, and as a leader who, of course, you were there in UP, you spoke to people, you interacted, do you think this politics of caste, politics of religion, now all of this with schemes, with people getting the last mile delivery, do you think that entire shift is happening, transformation in politics is happening? No, I don't think so. I don't agree with your wrong assumption you have, because I just backed it up with stats. No. I can tell you Azamgarh, because we have contested in the Assam elections 3-4 assembly seats within that parliament segment. Now BJP, see, as a saying goes that victory has many fathers, defeat has none.
So BJP had won, so they take, this every section voted for us. That was not the case. Guddu Jamali had contested from Azamgarh. And had Guddu Jamali had taken substantial number of votes, substantial number of Muslim votes Guddu Jamali had taken. As far as Rampur is concerned, yes, in my opinion, the elections were not free and fair. The local administration went hammer and tongs against the Samajwadi candidate, which they did not do when Akhilesh Yadav's better half was contesting for Mainpuri. But to say that it is that every section voted, yes, the CSGS data says that there's only one community in India whose vote percentage has not increased for BJP are Muslims. 2014 and 19, it was 6%, 6%. For other communities, it didn't get increased. And if that is the case, why can't the BJP give a Muslim an MP candidate? Before you get to that, there are studies carried out between the Economic Advisory Council to the Prime Minister finding no evidence of schemes catering to only one community. Not catering to only one community. One minute. Niranjan, I don't want to waste your time. I know you're referring to a study by a lady. Shamika Ravi. Yeah, I don't want to name her. But please understand that what was the water connection to the Muslims? It is still less. Is the government taking credit for me? No, listen to me. I have read that. I have read that, and I can easily rebut it. If someone buying the cell phone, are you taking, Mr. Modi, you can take the credit for it, for cell phone. I'm buying a cell phone. You know, the question is, if you are so loudly claiming, why have you cut down the pre-matric scholarship? Why have you abolished the fellowship? You know, I have put an RTI application on the same point. Please give us the number of Muslims who have got the Prime Minister Awas Yojana. No answer comes. So that study is completely farce. And I would request you, let us do a debate on that study. Okay. I'm ready for it. Yeah, but yeah, not on this. Not on this platform. मुझे ये बताइए, अब आने वाले समय में चुनाव है, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कर्नाटक में चुनाव होगा, तेलंगाना में होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगले साल लोकसभा चुनाव है. आपको लगता है ये जो तीसरे मोर्चे की बात बार बार होती है, ये एक हकीकत बन सकता है? ममता दीदी कोशिश कर रही हैं, अखिलेश यादव, आपके मित्र केसीआर, सब कोशिश कर रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा बन जाए 2024 से पहले. आपको लगता है वो हकीकत बन सकती है? देखिए, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि एक चेहरा उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, और नरेंद्र मोदी को मालूम कि जिस दिन कोई चेहरा खड़ा हो जाएगा वो कामयाब हो जाएंगे. हम ये कह रहे हैं कि एक चेहरा नहीं, भारत के 540 लोकसभा की सीट में चेहरों को खड़ा करिए आप, तब देखिए खेल में मजा कितना आएगा. आप भारत की जनता को अपने साथ में लीजिए और बीजेपी के खिलाफ खड़ा करिए. आपकी अपोजिशन यूनिटी से क्या होने वाला है? जनता को आप अपने साथ खड़ा करिए और बोलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है. आप उनको बोलिए कि भाई नीति आयोग की अगस्त 22 की रिपोर्ट है कि भारत में 87% लोग सिर्फ 27,000 रुपए महीना कमाते. आप उनको जाकर जनता को बताइए कि जो 20% गरीब हैं उनकी हाउस पर कैपिटा इनकम 50% कम हो गई, जो 20% दौलतमंद है उनकी 40% बढ़ गई. आप उनसे जाकर जनता को बताइए कि हाँ, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, 10% चाहिए, रियल ग्रोथ चाहिए, नॉमिनल नहीं चाहिए. ये सवालात आप करिए ना, आप जनता को अपने साथ लीजिए. अगर आप चेहरा बनाकर जाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाएंगे. मतलब आप ये कह रहे हैं थर्ड फ्रंट बनाइए लेकिन चेहरा मत बताइए. नहीं, चेहरा देखिए, चेहरा बनाएंगे तो आप मोदी जी के ट्रैप में आ रहे हैं. ये बात को मान. देखिए हम जो राजनीति सीखे ना मैडम, हमको ये सिखाया गया कि आप अपने अपोनेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर मुकाबला नहीं करेंगे, उनके वीक पॉइंट्स पे करेंगे. वो सबसे बड़ा चेहरा आज देश के. नहीं, आप नहीं, चेहरा का नहीं है, आप उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो. आप ये काम करिए ना.
आप करिए काम, आप उस पर देखिए, आप पूछिए उनसे कि भाई अगर आप हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा पूरी दुनिया में विश्व में मुकाम कितना है? 150 है हमारा नहीं, पर मुकाम। वो बताने के लिए लोगों को तो जाना पड़ेगा ना चुनावी मैदान में, जाएगा कौन? यही तो बात हमको करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियों को उतरना पड़ेगा उस अच्छा वो थर्ड फ्रंट बनता देख रहे हैं आपके नहीं देख रहे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो फारसी की कहावत है, नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तम। तो आपने जवाब दे दिया। माने नशिस्त का मतलब नशिस्तन एक निष्ठ होती है, सब बैठ गए, गुफ्तगू होती है, फिर बर्खास्त हो जाते हैं, तो वो उसमें क्या होने वाला? Which front are you in? A lot of fronts being formed lately. A lot of fronts being formed lately. We haven't seen you on stage. Yeah, with this is any a of these season of fronts fronts. yet. Are you in the third front? Huh? Are you in the part of the third? No, I am a front in my own capacity, so I don't need to be part of any front because everyone is a front with me. So I am a front, so I have no issues, But this is a season of fronts, so I don't know, what color and shape it will take place. But if your next question is going to be, are you going to be part of this front, this so-called front? You can't expect me to sit at someone else's feet. That's very near their feet and listen to their sermons. True. But I've seen you in UP. You didn't have any alliance, if I'm not wrong. No, we had Niranjan. Let me tell what I told you. Yeah. It was off the record. I can share it now. I told you are not going to win any seats. I told you that. Yes, you did. And I told you BJP is going to win the elections. Yes, you did. And I told you that this whole tamasha which Samajwadi is creating, that euphoria, is to fool Muslims to get their votes. On all these 3 points, I told you. We had a coffee in that huge place, that beautiful place where you did an interview. We had a setup for that interview. So that is true. That is true because you see, why is it that the only Muslims have to be the pole bearers of secularism? Why not the Yadavas? Why not the other caste and upper caste or whatever other castes are there? This is ingrained in the Muslim community that you should save secularism. It is not me who can save the secularism. It is a job of everyone to save that political secularism which has no life left in it. So, but that is the issue with the Muslim community because you come elections, look at this Karnataka elections now. Yeah. Everyone, no. Everyone is going and telling Muslims, आपको BJP को हराना है, secularism को बचाना है. So, what about reservation? अभी मत बात करो reservation का. What about hijab? Will you change the law? नहीं, उसके बारे में मत बात करो आप. But you can take a hardcore RSS guy in your party and you still talk about secularism. Yeah. Shetkar, Yes. the man who came from RSS, his whole life was in RSS, has now been bathed in this unholy water of secularism. That is the problem. And Muslims, oh no, अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे भाई? आप कब तक क्या करेंगे? See, how can the Muslims just sit on the sidelines and only talk about secularism and after election no one talks about them? This is my main struggle. The discrimination part, the inequality part has to be addressed. Because see, you have a close equation with Mr. KCR. You have, I don't know, do you have an alliance? Are you formally in an alliance with Kumaraswamy in Karnataka? You people get wrong. Yeah. We respect KCR for what he has done in Telangana. He has done a tremendous job, and that is why you see that we have the highest per capita income of any state in India, and credit has to be given to KCR. But I am not that close to influence his political decisions. Yes. Yes, in Karnataka, we were in talks, but unfortunately, the talks couldn't materialize. Yeah. And somehow it didn't materialize, it didn't fructify. So anyway, we leave it there. आपसे ये जरूर पूछेंगे ओवैसी साहब, आज मौका भी है, दस्तूर भी है और इस पर आप कई बार बोलते हैं, लेकिन आज रिपब्लिक समिट के मंच से पूछ रही हूँ आपसे सवाल, क्योंकि बात हो रही है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव का समय. तो आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर आप कई बार बोले हैं, क्या वो समय नहीं है कि अब भारत जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े? आपकी आपत्तियां हैं, उस पर आप कई बार बोलते हैं, लेकिन देश में एक संविधान एक विधान क्यों ना? कहाँ है, कैसा होगा बताइए? क्या आप जा सकते लक्षद्वीप को बगैर परमिशन लिए? क्या आप जा सकते अरुणाचल बगैर परमिशन लिए? क्या आप प्रॉपर्टी खरीद सकते एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हिमाचल में? सवाल यह है कि एक देश एक लॉ बोलते हैं, तो फिर अभी लव जिहाद का कानून क्यों बना दिया आप?
रिलीजियस कन्वर्जन का कानून क्यों बना दिया आप? गुजरात में मैं किसी का घर खरीद नहीं सकता, मैं क्यों बना दिया कानून? आप ही तो बना रहे हैं ना। इस देश को अगर किसी कानून की जरूरत है तो अनएम्प्लॉयमेंट को बर्खास्त कम करने की जरूरत है, डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है उसको कम करने की जरूरत है। आप बताइए, अगर हमारी जो जीडीपी जो कितने 3.4 ट्रिलियन जो 2018 में थी, आज भी वही है, आज भी वही है हमारी। इस पर काम करिए ना आप, इस पर बताइए। आज देश की 70% दौलत 5% लोगों के पास है, तो आर्टिकल 38 का वायलेशन नहीं हो रहा। नहीं, आप संविधान की बात हर बार करते हैं, तो ऐसे ही संविधान में आर्टिकल 44 कहता है अरे यूनिफॉर्म नहीं, सिविल कोड की बात। आर्टिकल 44 से ज्यादा स्ट्रेस आर्टिकल 38 पर दिया गया। शराब पर पाबंदी लगा दीजिए। चलिए आप, भाई शराब पीकर कितने लोग, महिलाओं पे जुल्म होता है, आप शराब पे पाबंदी। अच्छा, अब ये भी आप तय कर रहे हैं कि स्ट्रेस ज्यादा 38 पे है, 44 पे नहीं, क्योंकि 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। आप वो वर्ड्स पढ़ लीजिए, आप वो वर्ड्स पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। आप शराब पे पाबंदी लगाइए ना। आप कौन रोक रहा है आपको शराब पाबंदी लगाने से? आप बोल दीजिए कम से कम हम फ्राइडे नाइट पे कोई शराब नहीं बिकेगी, पूरे दिल्ली में राइट्स हो जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स हो जाएंगे लोगों को। Mr. Owaisi, you're a barrister, you're very progressive. Consider you very progressive. What is your stand on same-sex marriage? You see, my stand is that right to choice is a fundamental in Indian Constitution. And as a practicing Muslim, my stand is that it is a sin. I'm telling you very clearly. And I'm not beating around the bush. Because as a Muslim, as a practicing Muslim, I cannot drink alcohol, I cannot eat pig. That is there, but yes, there is a gray area of the Constitution, which the Supreme Court will look into it. That's perhaps the first time he's spoken on the issue. But let me also ask you, you spoke about politics of change, etc. Right now, I want to ask you a question, and I want Sucharita to come in. But I'll take the first part, and Sucharita, you can take the follow-up. What did you see in Atiq Ahmed's wife? If I'm not wrong, your party gave her a ticket, right, in the UP elections. No, I guess you got it wrong completely. But he was on stage. I'll tell you. Yes, it was seen as a political endorsement. I'll tell you. Atiq Ahmed's wife did join our party, not Atiq Ahmed. Yeah, his wife. We addressed 2 public meetings, one in Allahabad, one in Western UP. When the actual election process started, this again I told you off the record. You're forgetting. Yes. So they started supporting Samajwadi Party. Oh. They started, and they didn't want to contest elections also. So you mean they backed out? No. So they started supporting Samajwadi Party, and there is a very intellectual, Gyani person in Samajwadi Party. Who is this person? Whatever it is, who claims himself to be very knowledgeable, but he doesn't have that academic degree also, but he calls himself very Gyani. Whatever it is. So they got in touch with them, and they were supporting Samajwadi Party. That was the end of the matter for us. Now, what happened with Atiq Ahmed and his brother is condemnable. And I have always stood against encounters. I was an MLA, twice MLA of Andhra Pradesh, and at that time we had great left-wing extremism, and you can follow my assembly speeches. I've always spoken against encounters because I am of the firm opinion that it weakens rule of law. It weakens people's confidence in democracy. It gives the executive this power to decide who should live and die. That is the most dangerous aspect. Then if that becomes the norm and people start celebrating encounters, people start celebrating mob justice, we as an Indian, we must destroy this celebration of mob justice, of encounters. Even why do you require courts? Why do you require IPC? Why do you require evidence? Yeah. And a person who's being killed in the police custody, that makes it more heinous crime. That is the issue. This is what the whole issue is concerned. क्योंकि निरंजन ने जो सवाल पूछा वो उस समय का पूछा जब शाइस्ता परवीन आपकी पार्टी के अंदर शामिल हो रही थी। उस समय आपका एक बयान भी है और 2021 मार्च का, जब आपने कहा कि अगर आप कुलदीप हैं, त्यागी हैं, कपिल हैं तो आप लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन अगर आप अतीक हैं, मुख्तार हैं तो आप बाहुबली हैं। हाँ, वो एक तरह का एंडोर्समेंट नहीं था? नहीं, बिल्कुल सही है ना। अब देखिए अब बिहार में एक IAS ऑफिसर के कन्विक्टेड आदमी को छोड़ रहे हैं।
क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ जिन लोगों का आपने नाम लिया वही बाहुबली हैं, दूसरे बाहुबली नहीं है ना? बिल्कुल है, मगर हम ये कह रहे हैं कि आप उन पर भी तो कार्रवाई करिए। पर जब आप अतीक मुख्तार को बाहुबली है कहकर, आप उनको बाहुबली क्यों कह रहे हैं कहकर सभाओं को संबोधित करेंगे, तो आप उनको एक तरह की क्लीन चिट एंडोर्समेंट नहीं, कोई उनको उस वक्त तक अतीक का कन्विक्शन नहीं आया था। अतीक का कन्विक्शन तो अभी आया, उनके भाई का, उस वक्त कन्विक्शन नहीं था। 100 से ज्यादा एफआईआर थी। नहीं, समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के नेताओं में उन पर भी एफआईआर है। 100 से ज्यादा एफआईआर है। नहीं, उन पर भी एफआईआर है। एक लिस्ट है उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, जो ठाकुर बरादरी के हैं, बड़ी बड़ी लिस्ट है उनकी। नहीं सर, आप ये कहते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ 100 से ज्यादा जिस पर एफआईआर। हाँ बिल्कुल है। नहीं, और देखिए, अतीक अहमद के एफआईआर पर उनकी जो जिंदगी का हिस्सा है, उस पर हम उसको तारीफ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अतीक अहमद को जब कोर्ट से सजा हुई, क्या आपने मेरा स्टेटमेंट देखा कि मैंने कुछ कहा? नहीं कहा हमने। जब उनका एनकाउंटर हुआ पुलिस कस्टडी में, उस वक्त हमने उसको कंडेम किया। अबे लाइव चैनल पर आप जाकर गोली मार रहे हैं। और मेरा आज भी मानना है कि जिन्होंने ये काम किया है, ये टेरर मॉड्यूल है। आप बताइए कि 16 लाख के वेपन्स उन लड़कों के पास कैसे आते हैं जिनकी मां के घर के छत नहीं है, झोपड़ी में रहती है मां उनकी, और इतनी शुरू तरीके से, इतनी प्रैक्टिस उन्होंने। मैं भी थोड़ा बहुत शूटिंग जानता हूं, जबान की भी जानता हूं, वो भी जानता हूं, तो उसमें कम से कम उन्होंने 200 राउंड फायर किए होंगे प्रैक्टिस करने के। आप उनका बॉडी वेट देखिए, उनका हाथ का मूवमेंट देखिए, एक प्रोफेशनल तरीके से किया, तो ये डेंजरस है हमारे देश में। No, but you knew exactly what you were getting into when for example you knew the background of Atiq. So you mentioned at the beginning that you made, Niranjan, I am sorry to interrupt you. Every political party knows, including BJP, including Samajwadi Party, including BSP, including Congress, including Owaisi. Everyone knows. But do you consider that as a mistake? One of the mistakes? Regret? No, we didn't take Atiq Ahmed in our party. Not him, his wife. His wife had no case at that time. His son? तो फिर अतीक अहमद, His son also had no case at that time. No case. Atiq, yes, Atiq के पास cases थे, मगर मोहतरमा शाइस्ता के ऊपर कोई केस नहीं था. But they were not running an NGO over there. A lot of cases of extortion. Who's saying they're running an NGO? No, but No. I'm not. I am not saying they're running an NGO. But was there a criminal case against them? There was no criminal case. Because I've seen that you do look at people with talent, and you look, for example, your MP, Jalil, Imtiaz Jalil. You look for people who are acceptable, who are progressive, who can who have that grassroots connect. So that's why we felt that maybe. No, did you do a background check, for example? Owaisi sahab, basically I have the not minced qualification that words Shaista by had. saying that yes, the wife had joined our party. Yes. We addressed 2 public meetings, but when the election campaign started, when my car was, when someone tried to assassinate me. Yes, I remember that. At that time, no one from that side spoke to me. Which side? From Atiq's family, no one spoke to me. Oh, I'm telling are you. you hinting at something? No, I'm not hinting, but I'm saying no one spoke to me. And the funny part is that when I went to the parliament next day, there were only 2 people who really came and showed concern. Who was that? One was Nishikant Dubey, surprising. Who you criticize every day. No, and then the second was of the Kanimozi. Not a single Congress MP stood up and condemned it. Not a single secular party MP stood up and condemned it. I'm not saying that I deserve any patronization from these fellows, but as an MP, when someone fires 6 bullets at you, you don't even show, some concern. Apart from the IUML MP who was with me, who came to my home. But this is what I'm saying. This is how they behave. Yeah. Okay. Now, Mr. Owaisi, while we talk about time of transformation, which is our theme this year, because we're coming towards the end of our session, I want to ask you, what is your transformative vision for India of 2047? It's going to be 100 years in 2047. What is your vision of India, your idea of India? It is constitution only. The vision of any Indian has to be according to the constitution. Number 1, liberty of thought, equality of opportunity, fraternity for the weak,
the weak should become strong, the last should become the first. This is what is the constitutional vision for every Indian, which is what the preamble talks about. And yes, as I said, that I want the economy to grow 10%. Why at nominal, real 10%? Why should the poorest become more poorer and the rich become more richer? How do we increase manufacturing? How do we increase the consumption data? How do we bring down discrimination and inequality? For example, you have the Muslim community, 14%, only 4% are in higher education. Why don't we bring it to 9% by ensuring that all the scholarships are given demand-driven? And yes, of course, we want the terrorists should not come from Pakistan and kill people, the Kashmiris or any Indians in the valley. We want the basic job of a government is to uphold the territorial integrity of India. The government, whichever government will be there at that time, we hope that they will not lose more territory as this government has lost 2,000 square kilometers to China. We want. I would hope to see that we will have 42 squadrons, which is the requirement. I hope to see by that time we will have 200 ships. Which we have only 100 odd ships. It's happening. We had the air chief yesterday. We are buying in more planes than ever before. The LCA Tejas is going. You see, the air. I have read the excerpt of that. What air chief said. How many squadrons are we have now? 32. What is the requirement? 42. And then Russians are not giving us 2 batteries for S-400. Yes, we want peace in South Asia. That is very important. So this is my vision. It has to be according to the constitution of our country. And I hope that by, we don't change the constitution of Ambedkar. This country does not officially become Hindu Rashtra. I'll tell you one thing. I want to ask him, Siseta, for some reason, Pakistan media hates you. The Pakistani politicians hate you. Why is that? Why do they have a special love for Asaduddin Owaisi that they're from Pakistan? They talk about Owaisi. So in the initial stages, Arnab also had great misgivings about me in his original avatar. So when he happened to see that video of Pakistan, we met. He said, "I must tell you, you spoke very well." So now, unfortunately, this is a wrong thing. Why is it that I, as an Indian Muslim, will always have to show my patriotism for this country by speaking against Pakistan? Yes. We have got independence. But yes, I happen to be in Pakistan. They talk nonsense. We gave it back to them. So that is the end of the matter. Yeah. So that cannot be the barometer of testing my patriotism. It is beyond that. It is beyond that. It is beyond Pakistan. And please don't demean me by comparing me with Pakistan. No, I was wanted to ask that question. Thank because you. they often talk about you. They often talk about you. आप तेलंगाना में सरकार बनाते हुए देखते हैं अपनी पार्टी को आने वाली समय में? नहीं, मैं कहीं पर भी सरकार नहीं बनाऊंगा, ना मैं मंत्री बनूंगा, ना मैं संतरी बनूंगा। आपके छोटे भाई 50 सीटों से ज्यादा की बातें कर रहे हैं तेलंगाना के लिए। देखिए, बोले हैं और हम डिसाइड करेंगे जब चुनाव आएगा। और हमारी कोशिश यही होगी कि तेलंगाना में जो पीस और ग्रोथ हो रहा है, वो जो पर कैपिटा इनकम तेलंगाना का देश में सबसे ज्यादा है, और वहां पर जो तरक्की हो रही है उसको जारी रखा जाए। तो एक राजनेता के लिए एक अल्टीमेट मकसद क्या होता है? एक राजनेता के लिए जो एक पार्टी के एक्सपेंशन के लिए काम कर रहा है, अपनी पार्टी के एक्सपेंशन के लिए काम कर रहा है, क्या उसके लिए एक अल्टीमेट एम क्या होता है? क्या वो सरकार बनाने की तरफ सोचता है? नहीं सोचता। नहीं, ओवैसी साहब सोचते हैं? नहीं, देखिए, ये बड़ा सेल्फिश चीज है कि मैं सरकार में आ जाऊंगा। पार्टी का एक्सपैंड करना, पार्टी के ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन करना, लोकल बॉडीज जीतना, जिला परिषद जीतना, असेंबली जीतना, फिर पार्लियामेंट जीतना, ये हमारी कोशिश जिद्दोजहद रहेंगी। सत्ता में आके क्या करेंगे? उसके जरिए सत्ता में आते हैं। मिसाल के तौर अगर मैं अगर मंत्री बन गया तो मैं क्या कर पाऊंगा? और मुझे अल्लाह ने इतना दिया है, इतना मैं सोचा भी नहीं था। अगर आप मुझसे पूछेंगे 1994 में आप 2023 में आपको अर्नब गोस्वामी के शो में बिठाएंगे, तो मैं बोलता यार मजाक मत करो, क्या हम हैदराबाद की पुराने शहर गलियों से कोई निकला है, वो यहाँ तक दिल्ली आएगा? तो मैं नहीं है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। हैदराबाद वाली पार्टी आपको कहा जाता था, आज आप देखिए आपकी नहीं, हम जैसा मैंने कहा 8 राज्यों में नहीं, यकीनन मेरी पहचान मेरे उस सरजमीन से थी और रहेगी, और मुझे उस पर फख्र है।
मगर मेरा मानना यह है कि अगर उस सरजमीन से निकलकर मैं भारत के कोने कोने में जा रहा हूं, तो ये तो उस सरजमीन के जिम्मेदारों की मेहनत है कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि अब जाओ तुम जाकर यहां जो तुमने सियासी कामयाबियां हासिल की, यहां जो तुमने सियासी ताकत हासिल करने के बाद तुमने तालीम के मैदान में काम किया, उसको रेप्लिकेट करो। हम कोशिश कर डाइकोटमी है ना ओवैसी साहब, आप सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो वो सत्ता हासिल करने के लिए लड़ती हैं। देखिए, मेरे लिए सत्ता जरूरी है, मगर सत्ता का मतलब ये कि नहीं कि मैं मंत्री बन जाऊं या किसी सरकार का हिस्सा बन जाऊं। जब तक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस चाहे दलितों की हो या आदिवासियों के, मुसलमानों की नहीं होगी, इनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसमें देश को मजबूत अगर करना है तो दूसरे समुदायों की तरह आपको इनको भी एक लीडरशिप बनाना पड़ेगा। Firecracker, as always. Fireworks when Mr. Owaisi is here for flying in from Hyderabad and being with us at the Republic Summit 2023. Mr. Owaisi, thank you very much. Thank you very much for inviting me, and this time I kept my word. Twice I missed, but I appreciate that, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Owaisi, Sucharita and Niranjan, for that really thought-provoking conversation. Ladies and gentlemen, we're moving on to our next session, which is Time of Transformation, Challenging Popular Opinion. We have with us our guest, who is a leading global thinker who challenges the mainstream narrative about development and the environment. His analysis on the climate goes beyond just woke washing. As president of the Copenhagen Consensus, he has worked with hundreds of the world's top economists and several Nobel laureates to find the most effective solutions to the world's greatest challenges. May I request all of you to please be seated? We've got our guest speaker up on stage. A close India watcher, he challenges popular opinion and believes that India is in a position to use its leadership to prioritize the best solutions for the world. He's here with us today to tell us how India is doing better than all other G20 countries on development, and how India can help the world achieve amazing progress. We have with us